हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो बंधुगण देखु आज आम 20टी आमर सिलेक्टेड एमसीक्यू करवा जो जहाँकि आमर ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग रो टीचर सेंटर लर्नर सेंटर एंड लर्निंग सेंटर अप्रोच से तो यहाँ को मुझे गोटे सेपरेट क्लास आनी कारण सेपरेट एमसीक्यू क्लास आनी कारण यहाँ आसी जाए क्वेश्चन यहाँ गोटे दुईटा क्वेश्चन आसी से यहाँ मुझे आनी तो चलतु आम स्टार्ट करवा आज वीडियो को प्रथम क्वेश्चन देखो इन ए टीचर सेंटर अप्रोच द प्राइमरी रोल ऑफ द टीचर इज आपड़ पॉज करंतु एवं यार आंसर दिंतु है तो यार आंसर कौन हम ऑप्शन सी सोल अथॉरिटी एंड नॉलेज प्रोवाइडर है देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फीचर ऑफ ए लर्नर सेंटर अप्रोच तो कौन है यार आंसर देखो यार आंसर ये ऑप्शन सी स्टूडेंट्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज है देखो आमर नेक्स्ट क्वेश्चन द लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच प्राइमरीली फोकसेस ऑन आपण कहतु कौन हम यार आंसर कौन हम आंसर ये आमर ऑप्शन सी इम्प्रूविंग स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है नेक्स्ट क्वेश्चन जी देखो इन अप्रोच इज द क्लासरूम ऑफन लेक्चर बेस कौन हम यहाँ 4 नंबर ऑप्शन बी टीचर सेंटर है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो a classroom where students collaborate discuss and solve problems together best represents ऑप्शन कौन हम देखो ऑप्शन ए अच्छी टीचर सेंटर अप्रोच ऑप्शन बी अच्छी लर्निंग सेंटर अप्रोच ऑप्शन सी अच्छी बिहेवियरिस्ट अप्रोच ऑप्शन डी अच्छी डिडक्टिक अप्रोच अच्छी कौन हम देखो यार आंसर कहतु आप ये पॉज करूँ कहतु है तो ऑप्शन बी यार करेक्ट आंसर हो लर्निंग सेंटर अप्रोच नेक्स्ट देखो which of the following roles does a teacher take in a learning center environment कौन है देखो ऑप्शन ए रे अच्छी डिसिप्लिनरियन है ऑप्शन बी रे अच्छी कंटेंट एक्सपर्ट ऑप्शन सी रे अच्छी को लर्नर एंड गाइड ऑप्शन डी रे अच्छी एग्जामिनर तो कौन है बार आंसर ऑप्शन सी है को लर्नर एंड गाइड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए वन डिसएडवांटेज ऑफ ए टीचर सेंटर अप्रोच इज ऑप्शन ए देखो प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग ऑप्शन बी एनकरेजेस स्टूडेंट इंडिपेंडेंस ऑप्शन सी लिमिट्स स्टूडेंट एंगेजमेंट ऑप्शन डी डेवलप्स कम्युनिकेशन स्किल तो कौन है बार आंसर ऑप्शन सी लिमिट्स स्टूडेंट्स एंगेजमेंट ओके नेक्स्ट जी देखो आमर अच्छी इन अ लर्नर सेंटर अप्रोच स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू ऑप्शन ए अच्छी रिसाइट्स आंसर्स ऑप्शन बी अच्छी फॉलो फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन ऑप्शन सी अच्छी मेमोराइज फैक्ट ऑप्शन डी अच्छी टेक ओनरशिप ऑफ देयर लर्निंग है तो कौन हमार आंसर आप पॉज करंतु एवं यार आंसर करंतु है ऑप्शन डी टेक द ओनरशिप ऑफ द लर्निंग है नेक्स्ट देखो which approach aims to balance the roles of teachers learners and content कौन हम ऑप्शन ए अच्छी टीचर सेंटर ऑप्शन बी अच्छी स्टूडेंट लेड ऑप्शन सी अच्छी लर्निंग सेंटर ऑप्शन डी अच्छी ट्रेडिशनल कौन है आंसर ऑप्शन सी
लर्निंग सेंटर है कौन व्हिच अप्रोच एम्स टू बैलेंस रोल ऑफ टीचर्स लर्नर एंड कंटेंट एटा हियो कोन हमर लर्निंग सेंटर रे होइते हला चलो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन असेसमेंट इन अ लर्निंग सेंटर क्लासरूम आर मेनली यूज्ड टू कोन आउथरे पढि दोछि असेसमेंट्स इन लर्निंग सेंटर क्लासरूम आर मेनली यूज्ड टू ऑप्शन ए रे अछि ग्रेड स्टूडेंट्स at the end option B अछि motivate fear based learning option C अछि support ongoing learning and feedback option D अछि test memory recall कोन है आंसर ऑप्शन C support ongoing learning and feedback हला तो नेक्स्ट देखंतु Which of the following best describes the flow of information in a teacher-centered classroom? Student to student. Option B अछि देखंतु teacher to student. Option C अछि student to teacher and option D अछि group discussion. कोन कहै छै क्वेश्चन देखंतु कि which of the following best describe the flow of information in teacher-centered कोन teacher-centered classroom? तो कोन हमारा आंसर ऑप्शन बी टीचर टू स्टूडेंट एटा हिबो हमर कोन टीचर सेंटर क्लासरूम हैला तापर देखंतु अब देखंतु व्हाट इज द मेन गोल ऑफ ए लर्नर अप्रोच रो मेन गोल कोन देखंतु ऑप्शन ए रे कोन अछि कि कंट्रोल द क्लासरूम एनवायरनमेंट ऑप्शन बी रे अछि कवर all topics in the textbook option C अछि support individual student learning and growth option D अछि ensure teacher dominance कोन बार आंसर ऑप्शन C support individual student learning and growth हैला नेक्स्ट जीवा देखंतु which instructional method align most with a learner center classroom कोन देखो ऑप्शन ए अछि ड्रिल एंड प्रैक्टिस ऑप्शन बी रे अछि ग्रुप प्रोजेक्ट एंड डिस्कशन ऑप्शन सी रे अछि लेक्चर्स एंड नोट्स ऑप्शन डी रे अछि रूट मेमोराइजेशन एयर आंसर इज ऑप्शन बी ग्रुप प्रोजेक्ट एंड डिस्कशन हला देखो तबरे नेक्स्ट क्वेश्चन ए टीचर हु adapts their instruction based on student needs is practicing which approach option A अछि देखंतु टीचर सेंटर ऑप्शन बी कंटेंट सेंटर ऑप्शन सी अछि लर्नर सेंटर ऑप्शन डी अछि डायरेक्टिव सेंटर कोन है योर आंसर ऑप्शन सी लर्नर सेंटर हैला कोन कहि देखो ए टीचर हु अडैप्ट देयर instruction based on students needs हाला is practicing which approach एटा ही हमरो लर्नर सेंटर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा देखो चलंतु which of the following is not typically a characteristic of teacher centered learning कोन कहला कि which of the following is not typically a characteristic of teacher centered learning तो ऑप्शन ए देखंतु फोकस ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग ऑप्शन बी अछि एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन ऑप्शन सी अछि स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट ऑप्शन डी अछि टीचर डिसीजन मेकिंग तो कोन हिबो आपनटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन एटा गोटे हला निश्चित करिवे एटा पॉज करिकि हला एटा हिबो हमरो ऑप्शन बी एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन माने एटा कोन हला हमरो एटा हेला हमरो स्टूडेंट लर्निंग हला लर्नर सेंटर स्टूडेंट लर्नर सेंटर हला स्टूडेंट सेंटर कहबा लर्नर सेंटर कहबा समानटा हला देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु इन अ लर्निंग सेंटर क्लासरूम असेसमेंट्स आर मेनली यूज्ड टू ऑप्शन ए अछि शॉर्ट
students by ability, option B रही give grades only, option D रही option C रही enhance and support the learning process, option D रही reduce curriculum coverage. तो कौन है वो आंसर? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर enhance and support the learning process है। देखो ऑप्शन सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ दिस लर्निंग थ्योरीज सपोर्ट लर्नर सेंटर टीचिंग। देखो कौन हो यार आंसर आपन जे करिवे एटा हला ऑप्शन आंसर कहूँ देखो मुझे इधर आंसर हो कौन हमरो ऑप्शन बी कंस्ट्रक्टिविज्म हला। तापर देखिबा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन ए लर्निंग सेंटर अप्रोच कैन बी डिस्क्राइब एज कॉम्बिनेशन ऑफ। देखो ऑप्शन ए रही स्टूडेंट एंजॉयमेंट एंड एंटरटेनमेंट, ऑप्शन बी रही लर्नर सेंटर्ड एंड करिकुलम फोकस्ड strategies, ऑप्शन सी रही लेक्चर एंड रिपीटेशन, ऑप्शन डी रही मेमोराइजेशन एंड डिसिप्लिन। यार आंसर हो ऑप्शन बी लर्नर सेंटर्ड एंड करिकुलम फोकसेस स्ट्रेटजीज है। नेक्स्ट जीवा में देखिबा कि इन लर्नर सेंटर एनवायरनमेंट फीडबैक इज यूजुअली, ऑप्शन ए रही वन डायरेक्शनल फ्रॉम टीचर, ऑप्शन बी रही इग्नोर्ड, ऑप्शन बी सी रही इंटरेक्टिव एंड ऑनगोइंग, ऑप्शन डी रही एवॉइडेड टू प्रोटेक्ट फीलिंग। तो कौन है आंसर पॉज करंतु एवं आंसरटा दियंतु है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इंटरेक्टिव एंड ऑनगोइंग। ए देखंतु एई हमरो ए जो एमसीक्यू क्लास रो एटा लास्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन देखंतु व्हाट इज ए पोटेंशियल चैलेंज इन व्हाट इज द पोटेंशियल चैलेंज ऑफ लर्नर सेंटर अप्रोच। ऑप्शन ए रही इट मेक्स स्टूडेंट्स less creative, option B रही it reduce student engagement, option C रही it requires more planning and flexibility from teacher, option C रही it limits collaboration। कौन है आंसर? ऑप्शन C it requires more planning and flexibility from the teacher ओके। तो एटा मु कोन 20 सिलेक्टिव आमर जो टीचर सेंटर लर्नर सेंटर लर्निंग सेंटर कंटेंट सेंटर मुझे वीडियोटा बनई है ना। जदि आप भल लगे प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करवा बिल्कुल भी भूलें। ठीक अच्छे रोची धन्यवाद।